Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss measles and polio. So let's move to the class board. So dear students, we were discussing some viral diseases which are common or which were common in Pakistan and especially all over the world as well. So we have discussed already, number 1, smallpox. That has been discussed. Number 2, we have discussed herpes simplex. Number 3, we have discussed influenza. Or which is called as flu. And number 4, we have discussed mumps. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जिसको हमने कहा था कनपेड़े. सो यहाँ पर in front of there was swelling. So another disease, an important disease, that is measles. तो dear students, जो कॉमन नेम्स हैं इन डिजीज़ के हमारे यहाँ, उसके हवाले से भी मैं बता रहा हूँ आपको, साथ साथ इन्फॉर्म किया है. सो स्मॉल पॉक्स, इसको क्या कहते हैं? चीचक. हर्पीस को आमतौर पर हर्पीस ही कहा जाता है. इन्फ्लुएंजा को फ्लू कहा जाता है. मम्प्स को कनपेड़े कहा जाता है. और नाउ द मीजल्स, मीजल्स को कहा जाता है खसरा. सो इट्स कॉजेटिव एजेंट. So it is caused by mumps virus that belongs to group of large viruses called paramyxoviruses. मम्प्स और मीजल्स, इन दोनों के जो वायरसेस हैं उनकी फैमिली सेम है, पैरामिक्सोवायरसेस. तो फैमिली सेम है, ठीक है, वायरस सेम नहीं है. पैरामिक्सोवायरस family. Clear? And one more thing, it is also RNA enveloped virus. और enveloped किसका होता है स्टूडेंट्स वायरसेस पे? It is of the host membrane. Clear? Now its structure. So that is its structure. That is measles virus. Clear? And dear students, now it's pathophysiology. So
So as far as its pathophysiology is concerned, remember one thing, the mumps and measles, especially the measles virus, enter into the host through fecal-oral and respiratory रूट्स। क्लियर, ये दो रूट्स है इसके ट्रांसमिशन के या मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका। फीको ओरल यानी इन्फेक्टेड पर्सन के जो फीसिस हैं या फ्रॉम द थ्रू द ओरल कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी रूट्स जैसे कि स्नीजिंग, लाइक कफिंग, तो उससे जो उनसे ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। इफ समवन इनहेल्स it will be the most probably it is the disease is going to be happen. और डियर स्टूडेंट्स याद रखने, चाइल्डहुड रैश डिजीज में इसका सबसे पहला नंबर है। इट इज द फर्स्ट among the childhood rash disease। बचपन में जो खारिश वाली और वो दानों वाली जो बीमारियां होती हैं कॉमन चाइल्डहुड के अंदर, उसमें सबसे टॉप पे इसका नंबर मौजूद है। क्लियर, एंड इवन के डियर स्टूडेंट्स द एडल्ट पॉपुलेशन over the world, all over the world, सिर्फ किसी मखसूस हिस्से में नहीं, किसी खत्ते में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में the adult population is also susceptible to measles। तो जिंदगी में एक दफ़ा तो हो ही जाता है, ठीक है, अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई तो एक दफ़ा तो ये हो जाता है। जिसको एक दफ़ा हो जाए तो फिर ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, लाइफ टाइम ऑलमोस्ट इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करेगी डिजीज, ठीक है। सो इट प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है डियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट्स। So let's suppose this is a body of a baby, okay, just a dummy diagram। सबसे पहली चीज डियर स्टूडेंट्स जो इस मीजल्स में अपेयर होती है, दैट इज कि जो फोरहेड है यहां पर ब्लॉची रैशेस अपेयर होंगे यहां पर। इस सबसे पहला सिम्टम इसका ही होता है, ठीक है। द ब्लॉच कहते हैं एक इर्रेगुलर बड़े से पैच को, जो कि इर्रेगुलर शेप हो और बड़ा सा आमतौर पर साइज में हो, उसे कहते हैं ब्लॉच। रैश कहते हैं वो जो इचिंग के जरिए जो रेड कलर के जो पिंपल्स बन जाते हैं या वो वेजिकल्स बन जाते हैं। सो ब्लॉची रैश एट द फोरहेड
appears at first, सबसे पहले यहाँ पे वो रैश अपीयर होगी। आमतौर पर इसको कंपैरिजन में देखा जाता है चिकन पॉक्स के साथ। तो चिकन पॉक्स में और इसमें सबसे हम इनिशियली डिफरेंशिएट इसी से करते हैं कि इसमें मीजल्स में जो सबसे पहले यहाँ पर फोरहेड पे यानी माथे के ऊपर ये ब्लॉची रैश अपीयर होगी यहाँ पर, और जबकि चिकन पॉक्स में यहाँ पर चेस्ट एरिया में, ट्रंक एरिया में, यहाँ पर इस जगह के ऊपर वो ब्लॉची रैशेज अपीयर हो। ठीक है, सो वी आर कंसर्न्ड ओवर हियर विद द मीजल्स। तो यहाँ पर इसके बाद फिर बिहाइंड द ईयर्स यहाँ पर, ठीक है, कान के पीछे, फिर चेहरे के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे ये रैशेज होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये ट्रंक पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे ये रैशेज। ठीक है, फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की तरफ मूव करेंगे। तो ये इसका पैटर्न है, दैट इज इट्स पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन। देन द रैशेज appear behind ears, then on face, then on trunk, and finally extremities. Clear? Extremities means upper limb or lower limb. So that is its pattern. तो सबसे पहले फोरहेड पे, ये तो जस्ट रैश के वाले से मैंने बता दिया। ठीक है, नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बेबी सफर्स फ्रॉम हाई फीवर। द बेबी सफर्स फ्रॉम हाई फीवर, तेज बुखार। कितना तेज बुखार हो सकता है? 40 डिग्री सेल्सियस अप टू 40 डिग्री। हमारा जो नॉर्मल कितना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होता है 36.1 टू 37.8 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री तक जा सकता है। यानी अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करें, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 104 पे बुखार जा सकता है, हाई फीवर। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, देयर इज कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस मीन्स the red inflamed eyes, आंखें बिल्कुल सुर्ख ऐसे बिल्कुल रेड हो गई होंगी। कंजक्टिवाइटिस ऐसे कहा जाता है, जो कंजक्टिवा अंदर होती है वो रेड कलर की हुई होंगी। सो ये भी इसकी एक सिम्टम्स में से मौजूद है। इसके अलावा सोर थ्रोट एंड हैकिंग कफ। हैकिंग या जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ, खुश्क खांसी जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो गले में दर्द भी होगा खांसी की वजह से, और ये रेस्पिरेटरी यानी ट्रैक को भी बुरे तरीके से इफेक्ट कर सकती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये इसके पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ये रैशेज बनेंगे, दैट इज इन द मीजल्स। क्लियर? और जैसा कि मैं बताया कि अगर हम चाइल्डहुड डिजीज़ में जाएं, इट इज़ अमंग द कॉमनेस्ट डिजीज़। बचपन में एक दफ़ा तो हो जाती है, ठीक है, और एक दफ़ा हो जाए तो फिर द पर्सन बिकम्स इम्यून। क्लियर? नाउ देयर इज़ अनदर डिजीज़। अच्छा, तो इसकी मैंने प्रिवेंशन आपसे पहले इसे प्रीवियसली मैं शेयर कर चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी कर देता हूँ। सो इसकी प्रिवेंशन क्या? दैट इज़ MMR वैक्सीन, दैट इज़ मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला। ठीक है, चूँकि ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं ये वायरसेस, तो एक ही वैक्सीन से इनके खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी वो मिल सकती है। क्लियर? और डिस्टेंस इट इज़ ऑल्सो कंटेजियस। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कंटेजियस। तो जिसको हो जाता है तो उसको फिर कुछ अर्से के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, ताकि इससे दूसरे पर्सन को भी ना हो, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द हाईली कंटेजियस डिजीज़, one of the highly contagious disease. Clear? And another disease, another viral disease, that is polio myelitis, जिसको हम commonly, most commonly क्या इसको कहते हैं? पोलियो। Actually its name is poliomyelitis.
Clear? So its causative agent as far as its causative agent is concerned, it is caused by poliovirus, that is RNA but non-enveloped virus. RNA and non-enveloped virus. Dear students, I remember one thing. It is just like this. This is the capsid, like this, and it is one of the smallest viruses. छोटे viruses में मौजूद है, non-enveloped. So here it's core only, and it is one of the smallest viruses, and its shape is spherical. जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, इट्स स्फेरिकल. जस्ट एक कैप्सिड है इसके अंदर, और उसके अंदर मौजूद है इसका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. Now it's pathophysiology. So as far as its pathophysiology is concerned, the virus is highly contagious clear, ये भी highly contagious है, और it causes inflammation of spinal cord and brain stem. Brain stem का पता है ना dear students? Medulla oblongata plus pons plus midbrain, they are collectively called as the brain stem. Brain stem और spinal cord की inflammation cause करवाएगा. So that is the reason the disease is called as poliomyelitis. So poliomyelitis, it literally means the inflammation of spinal cord. ये basically spinal cord की inflammation होती है. अच्छा, थोड़ा सा मज़ीद आके चलें. So inflammation of the spinal cord and brain stem and destroying the myelin sheath of motor neurons. Motor neurons का तो पता ही है dear students. The neurons that carry nerve impulses from CNS, means central nervous system, brain and spinal cord, to effectors. ठीक है, यानी मसल्स और हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ तक जो मैसेज लेके जाते हैं न्यूरॉन्स, उनको मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है. उनके ऊपर माइलिन शीथ होती है. एक्चुअली उसको ही उसके साथ ये मसला मसल करता है, उसको ख़राब कर देता है. तो ये मैसेज लेकर जाती हैं. तो जब इफेक्टर्स तक मैसेज पहुँचेगा ही नहीं, सो इट विल कॉज, सो इट लीड्स टू पैरालिसिस,
ठीक है, उससे वो फॉलेज हो सकता है जिस एरिया को, और मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर एट्रोफी, एट्रोफी का मतलब होता है डिक्रीज इन मसल प्रोटीन, जिसकी वजह से मसल बिल्कुल छोटा रह जाता है, बिकॉज वो यूज़ नहीं हो रहा। यूज़ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ तक मैसेज नहीं जा रहा। तो मैसेज नहीं जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा मसल, ठीक है, उसकी प्रोटीन्स होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, डिक्रीज उनके जो कंटेंट उसमें कमी वाक़ई होती है, जिसकी वजह से उसको कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एंड disabilities. Clear? It also leads to disability. So actually, the primary infection that occurs vary in social and economic conditions. तो आम तौर पर अगर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक हों किसी भी जगह पे तो वहाँ पर ये वायरस कम फैलता है। लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, लो हाइजीनिक कंडीशंस, वहाँ पर ये वायरस ज़्यादातर फैलता है। सो यानी कि पुअरली हाइजीनिक एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं या जो क्लीनलीनेस है उसको सही तरह से फॉलो नहीं किया जाता, वहाँ पर इसके होने का ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। सो इट इज़ अमंग द स्मॉलेस्ट वायरसेस, ठीक है, ये छोटे वायरसेस में शामिल है। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या, पोलियो में आपने देखा है कि मोस्टली एक लेग या दूसरी लेग, बाजुकात सिंगल यानी यूनिलैटरल, बाजुकात दोनों टांगें ये इफ़ेक्ट होती हैं। और ये भी याद रखिएगा, इट इज़ हाईली कंटेजियस and is transmitted by respiratory droplets. अगर किसी भी पर्सन को हो और वो स्नीज करे तो आसपास उसके कोई भी पर्सन होगा तो वो उससे इफ़ेक्ट हो सकता है। हाईली कंटेजियस डिजीज़ में ये भी शामिल है और इसी वजह से पूरी दुनिया में इसके हवाले से मुहिम चलाई जाती है। 5 साल तक के बच्चों को पिलाया जाता है और एडल्ट्स जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई इसके हवाले से, तो इसमें आपको याद है कि वो आम तौर पर जो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर और जो ड्रॉप्स पिला जाते हैं। सो इट्स प्रिवेंशन इज़ द ओरल पोलियो ड्रॉप्स, जो कि आमतौर पर 5 साल तक के बच्चों को ज़रूर पिलाए जाते हैं, ठीक है। इवन इफ़ यू हैव टू ट्रेवल अब्रॉड, अगर आपने कहीं बाहर के मुल्क जाना है तो वो वहाँ पर भी देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट, आपकी हुकूमत की तरफ से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट यू हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द पोलियो वायरस। क्लियर? तो डिसेबिलिटी कॉज कर देता है बंदा जो है। बहुत सादा सी बात है, लेट सपोज कि ये मेरा हाथ है, इसमें नर्व इम्पल्सेस आ रही हैं, मसल्स मेरे फैक्टर्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज आ रहा है। सो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहेगा, नॉर्मल काम करता रहेगा तो ये ठीक रहेगा। लेकिन अगर मैसेज आना ही बंद हो जाए यहाँ पर, ठीक है, तो ये मसल इस्तेमाल नहीं होगा। तो जो मसल एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं होता तो उसकी जो ब्लड सप्लाई और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कम कर दिया जाता है ताकि दूसरे बॉडी पार्ट्स को जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो जो है उनको पहुँचाया जाए। इसीलिए इसी तरह से अगर आपने देखा होगा, अगर कोई पोलियो पर्सन जो है इफेक्टेड, तो उसकी जो इफेक्टेड लेग होती है वो बिल्कुल ऐसे सिकुड़ी हुई होती है, जबकि दूसरी लेग जिस पे वो चल रहा होता है क्रेडल के ज़रिए तो वो नॉर्मल होती है, ठीक है, उससे थोड़ा सा बल्की होती है। मीन्स कि जब मैसेज जा ही नहीं रहा, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइनल, क्योंकि वहाँ से जो मैसेजेस आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए, मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए, जो उसके रूट्स हैं, जो इसका जो मोटर रूट है यानी इससे वेंट्रल रूट, नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में, जो इसके स्पाइनल कॉर्ड के 2 रूट्स होते हैं, एक डोर्सल और एक वेंट्रल। तो वेंट्रल रूट जो होता है ये मैसेजेस लेकर जाता है, इसमें मोटर न्यूरॉन्स के जो फाइबर्स होते हैं, तो ये उसको बेसिकली इफेक्ट कर रहा होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे रीट्रोवायरसेस।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।